राम राम दोस्तों, आप सभी का फिर से जेपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। बड़ी दुविधा की बात है कि सब लोग तो अंग्रेजी बोलना सीख ही जाते हैं किसी न किसी तरह से, लेकिन कभी आपने गौर किया है, हैव यू नोटिस समटाइम द प्रोनाउंसिएशन इज द टोटली डिफरेंट एंड द वे द पीपल स्टार्ट प्रोनाउंसिंग इज इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। कभी कभी हम जो बोलते हैं अगले को समझ में आता है या नहीं वो भी मैटर करता है ना। तो एक बार हम लोग आईपीएस सुधार लेते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट सुधार लेते हैं, तो आने वाले जो माध्यम है, जो बोलने का तरीका है, वो शायद बदल जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, आप घबराओ मत, मेरे हर एक वीडियो को ध्यान से देखो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों से भी शेयर करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप सच में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या एमी बस टाइम पास करना चाहते हैं तो ठीक है, यू कैन जस्ट स्किप द वीडियो एंड जस्ट वॉच अनदर। लेकिन आप सच में सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अंग्रेजी का। इसलिए पहले हम देखते हैं कैसे किसी चीज को प्रोनाउंसिएट करते हैं। आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस लग जाओ, सुनो ध्यान से। आईपीएस सिंबल्स, वॉवेल, साउंड, ठीक है, और कॉन्सोनेंट भी है। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है तो धैर्य रखें। When you see A is the like calm, it is not calm, it is the calm. And AI is the symbol you can see here, is the act, mass. When you find A is the like, okay, act, mass. And dive, cry, dive, AI is the dive, cry. When you see the symbol like this, fire, tire, fire, you know the meaning well. AU is the A and a little bit turn is the U. So is out, down. It is not out. Out हम बोलते ही नहीं, ठीक है? Out, down, right? Next, floor, soar. A, U and O is the R. Floor, soar. And then E is like A, met, lend, pen, right? AI is the say, is not say, the say, wet, okay, wet, say, wet, fair, care. Next is the E and is the kind just round opposite of E, a little bit big one. So is the fair, care. I is the like E, so fit, win. I know a little bit complicated and boring, but मुझे नहीं लगता कि आपको इसे छोड़ना चाहिए, है ना? Next is seam. Just I is a symbol of like E. Here is the me. इसमें क्या मैं पढ़ाना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि आप कभी कभी इसको सिंबल के माध्यम से भी आप अंग्रेजी अपनी लिख सकते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे ही स्पेलिंग याद कर लेते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में भी कभी आई इज द सेम इज द जस्ट राइट SIM या मी MI। इट इज नॉट वे ऑफ राइटिंग, लेकिन आप टेक्स्ट मैसेज में कर सकते हैं, राइट? सो सेम इज द सेम, मी, थोड़ा स्ट्रेस दे खींचना है, सेम, मी, ठीक है। नियर, यानी आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखना है, डिक्शनरी यूज करना है, तो कैसे आप उसको यूज करेंगे, उस ये बहुत हेल्पफुल होगा। डिक्शनरी कभी कभी आप, ठीक है, सब हर हर वर्ड का देखो साउंड आपको खोजना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों ना करो कि अपने आप को इम्प्रूव कर लो, कहीं भी हो बस डिक्शनरी में जाओ और ऑटोमेटिक वो साइन या प्रोनाउंसिएशन दिखा देगा, ठीक है, कि इसका ऐसे आई आए तो किस तरह से SEEM या ME कैसे दी। सिंबल में लिखा है कि SIM, तो आपको क्या पढ़ना है, सीम एंड मी, ठीक है। वैसे तो आजकल जो है टेक्नोलॉजी का टाइम है, समटाइम्स हम डिक्शनरी रखे होते हैं तो यूज नहीं कर पाते, तो इसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी। सो नियर, ओके, बियर्ड, लॉट,
it is the O is the symbol is like, okay, opposite of A का उल्टा होता है lot, spot. And E and U is the like note, note, coat, note, coat. And then claw is the AU is the like oh, claw, more. Okay, claw, more. Next is the, when you find like this symbol is the O is the like C, opposite of C and I you can write. Even you can see the dictionary like boy, joint is a boy, boy, joint, and then joint, right? Could, you already we have seen here. Could, stood. U is the like you use. U is the normal O U, yeah, U is all time U. Okay, and here is the seal, pure, pure, sure. Is the U and U and A, U and A become sure, sure, pure, sure, pure. And then it is third is the turn, is the kind of turn, third, turn, third. And then this symbol is very well known and of course famous. Is the U, and is it like U, when U is pronounced like O, so is the fund, must, fund, must, right? And then B, you know well, is the now let's talk about the consonant sound. Is the bed, rub. D, you know, done, read. F is like for, so fit, if. G is like good, dog. H is all time H, okay, ha, so hat, horse. See the spelling. And it is the Z, so it is the Y actually, the yellow, and the U. It should be Y, so here's the mistake. Pardon me. And K is the king, peak. So how we pronounce here? Yeah, right. The IPA chart. So is the peak is the C, K is the K, and the K is already K. So K. So king, peak. L is the law. Okay, like lip, bill. M is the mat, ram. Okay, it is not ram, it is a ram. Okay, and N is a note. Yeah, not. It is not note. It is a knot and a teen. Okay, and P is the all-time per. So pay, leap. Next is R is like run, read. S is all time saw. ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत, कि थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं तो हमें एक क्लियर हो जा रहा है एटलीस्ट कि सॉ, एस को क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं, आर को क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं। कॉन्सोनेंट आप लोग एलकेजी से पढ़ते आ रहे हैं, समझाने की चीज नहीं है, फिर भी अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं सीखना इंग्लिश, तो कुछ बेसिक चीजें जान लेना ही जरूरी है, नहीं तो बाद में एक हिंदी में कहावत है कि आदजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पै जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया एक कहावत है, तो आप जानते ही हो। तो हमें अधूरी ज्ञान नहीं चाहिए, चलो मजबूत अच्छे से पढ़ाई करते, डीपली स्टडी करते हैं। यही सब सीखने के लिए आप जाते हैं इंस्टीट्यूट में, बहुत सारा पैसा भी पे कर देते हो, तो यहीं पे क्यों ना सीख ले, मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो T is the T all time to, like talk, bait. So to is the T is the T, and V is the V, like V. एक लीप है जो लीप के ऊपर थोड़ा सा दांत लगा रहेगा। इट इज नॉट ब, इट इज नॉट भ, इट इज द व, ठीक है। सो वैन, लव, ठीक है, वैन, लव। एंड देन W is the wine, is the wine is wool, and then X is the logs, and Z is the zoo. So it is the X is the Xerox, is the X is all time X is the Xerox. Okay, voila. And some sounds is the really important in Hindi build, Hindi language, sa and sh. अभी तक हम भोजपुरी वाले स बोलते हैं, श बोल नहीं पाते, बंगाली वाले श बोलते हैं, स बोल नहीं पाते हैं। उर्दू में डिफ्रेंसिएशन अब दिख जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज में आपको स श दोनों डिफरेंस दिखेगा, लेकिन हिंदी में स श दो इसमें भी दिखेगा, लेकिन भोजपुरी में मैंने देखा है उसमें स सिर्फ है, श नहीं है। उसी तरह आपका बंगाली में श है, एस एच,
तो वो जानना जरूरी है, कहाँ स बोलना है, कहाँ श बोलना है। ठीक है, जब भी एस एच आए इंग्लिश में तो समझ जाओ हमें क्या बोलना है, श। ठीक है, लाइक शीप, विश, इट इज नॉट सीप, सीप नहीं, तो सीप दूसरा हो जाएगा मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे मीजर इज अ मीजर, लेजर, राइट। एंड एन इट इज एन लिटिल बिट, एन थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है, तो सिंग, वर्किंग, you know the sound is ing, so sing, right? And is a T and S capital is a, when we talk about, so it is a cheap and which, cheap, which. Next sound is O, is a thin, meat, so it is sound is a uh, round, it is the omelette, okay. And it is thin meat. And then when you write the symbol for then and bath, okay, then it is the th is the like this, okay. And joy breeze, joy breeze, can you tell me the last one, which which sound it indicates? If you understand, so please mention your answer in comments box. यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे ऐसे बने रहिएगा। मैं आप लोगों को पूरे जोर से, यानी पूरे बेसिक जो पिलर है लैंग्वेज का, वो सब आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे चैनल जेपीएस क्लासेस में बने रहिए। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।